Vanandan sir? Devanand, sir. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Very good afternoon to proceed. all of you. Today, this is the fourth day of our webinar. This webinar is organized to provide an awareness of our UGC guidelines, especially in transforming the B.Ed colleges into multidisciplinary. In this webinar, so far we had several speakers like Dr. Professor S.K. Kag and Pradeep Kumar Mishraji. And the session webinar was inaugurated by our respected Tiwari, who was the expert committee chairman of this UGC guidelines. And today we have a renowned two personalities to address our gathering. These sessions are mostly eagerly waited for all our participants, including me, because these two scholars are well versed in the area of education and teacher education. I would like to first welcome our most respectful, beloved Professor HRUSHIKESH SENAPATY sir, who was the former director of NCERT. While he was sitting in the NCERT itself, he has contributed a lot to the formation of national education policy, as well as for the all-round development of education, as well as teacher education in India. You know, he was formerly the head of Regional Institute of Education, Bhopal, and also he was an expert of UNESCO for ICT. I would like to welcome our great personality, HRUSHIKESH SENAPATY ji, to this session with all reverence. Sir, welcome, sir. And BANWARI NATIA ji is a very, very familiar educationist scholar for us, because always he was extending his hands, helping hands to everybody who needed a guidance in education and teacher education. And from all his speeches, all his writings, we have understood that he has very abstract ideas about teacher education programs in India, and concrete concepts regarding the quality of teacher education, as it has provided a quality education for the development of the nation. In NCTE itself, he has taken several steps to make it human friendly, the NCTE, as well as he has took more attempts to eliminate corruption in NCTE. Say, in this occasion, I would like to extend a hearty welcome to BANWARI NATIA ji to present his
ideas on transformation of B.Ed colleges into teacher education, sorry, multidisciplinary. So I welcome you, sir. Sir, namaskar, NATIA ji. And I would like to extend my welcome to all the delegates, especially our guiding lamp, our torch of pace, Dr. Shupal Singh ji. He is always forefront of us, leading us in the right directions, and we are achieving that. I welcome him also, and Dr. Venkatesh, Dean of Education from Davangere University. And I would like to request all the participants to mute your mic. Shashi Malik, madam, please mute your mic. Please, all of you cooperate with us, because in many sessions we had this disturbance. Perhaps you may be not knowing that your mic is on. Please be vigilant on that. Please keep your mic mute. Okay, thank you. As well as our coordinators, Tripta Parmar madam, Sushila Narang, and our leader of this webinar, the convener, Dr. Sarabjit Kaur, and all other PACE members and principals and other teacher educators. All, I would like to welcome to this session. Thank you very much. Over to Sarabjit ma'am. Thank you so much, sir. Thank you. Now it's time to humbly invite our first speaker. So I request Professor HRUSHIKESH Senapathy ji to kindly throw light on trust areas of transformation of teacher education institutions. Over to you, sir. Dr. HRUSHIKESH Senapathy ji. Sir, you are not audible. Kindly unmute yourself, please. Yeah. Thank you, madam. Respected Professor Devanandan ji and Professor BANWARI NATIA ji and other dignitaries present in this webinar. I'm really happy to be a part of this program. This is a great opportunity to share my experiences with you all. And the topic is very important because we are discussing something on thrust areas of teacher education, that means particularly transformation, what has been recommended by NCEE, by NEP 2020. First of all, I would like to mention here that when we are discussing about teacher education, we should not discuss teacher education in isolation, because teacher education all the time is dependent on school education, and we are preparing teachers for our schools. So what is happening in school education, what are the changes we are going to bring about in school education, and that is going to be reflected in teacher education program, so that there should be proper, there will be proper linkage between teacher education and school education. Similarly, it is also linked to higher education, and there should be smooth transition from school education to higher education, and that part also this our teacher education programs, the teacher education institutions should take care of. And when we are talking about the transformation, it has two parts. One is physical, that NCTE will take care of, and that that has already been there in the regulations, in the guidelines. And I would like to highlight on the academic part, that is most important when we are talking about the transformation. By constructing new building or enhancing the physical facilities, we may not bring about change in the teacher education. Real change will take place if we bring about change in the academic program. So how we are conducting our teacher education program, that is important. So from that point of view, first we have to see the vision of the policy.
what is there in the vision of the policy. Keeping in view the vision, we can come to the stages what has been recommended by NEP and also the guideline of NEP. Then particularly the reforms what has been suggested in the area of curriculum, in the area of the pedagogy and assessment. So I would like to highlight mostly the academic transformation, and that is the need of power. And without bringing academic transformation, we cannot bring about change in teacher education program. And that transformation, what we are discussing, that is mostly keeping in view the changes what has been recommended for school education. Because now we all know we are in the process of developing the curriculum framework, and curriculum framework for early childhood care and education has already been released, and accordingly textbooks will come. And now we are in the process of developing national curriculum framework for school education, for teacher education, and for adult education. Because this time we are going to develop 4 national education curriculum framework. That is most important because our focus is on early childhood care and education. That is the most important area, and for that we don't have teacher, and we need good teachers for to implement the recommendation of NEP, particularly at this foundation stage, and that is why we have to take care of that stage. Similarly, we have to take care of the other stages, that is preparatory and uh, uh, middle stage, and also the secondary stage. So because why I'm putting emphasis on this, because first let us know what is there in the vision of the policy, because that is the most important. Why we are putting so much emphasis on vision? Because in the vision of the policy, it has been mentioned that we have to put emphasis on Indian ethos. And when we are talking about teacher education, we are talking about the teachers. And our teachers should know about this. That is the most important thing. When we are talking about Indian ethos, that means we are putting emphasis on our Indian culture, Indian tradition, Indian value system. And why we are doing that? Because our children should be connected to their roots. And because of the impact of this Western culture, our youths are alienating from our culture. And there is a lot of crime in our society, a lot of disturbance in our society, and a lot of deterioration in values. And that is why policy has taken cognizance of this. And when we will take care of this particularly our culture, our tradition, our value system, and when we integrate it with our curriculum, and particularly when we're transacting the curriculum, we should also take care of this. And that will help us to bring about change, and we can prepare good human being. That is the purpose of education. And to prepare good human being, we need good teacher. So that from that point of view, if we look at the vision that the Indian ethos, Indian culture, that should be reflected in teacher education program. That is the most important thing. And what policy has recommended, that by integrating our culture into our curriculum and our particularly our classroom and the pedagogical process, and what we can do, we can create a very equitable, vibrant knowledge society. That is another thing, because we know India is a very diverse country, a lot of diversity, a lot of variation, and our children are coming from tribal area, rural area, slum, and also from the disadvantaged group, the bank children. And we now time has come, since we are in 21st century, we have to take care of all our children, all our children. That means who are coming from deprived section, disadvantaged group, we have to also take care of them. We have to provide them right type of education. And that is why now it is most important that our children should be connected to their roots, and so that they can understand their culture, their tradition, their value system. Along with that, they will get opportunity to develop their potentialities, what they have acquired, what they have, so that they can develop all their potentiality, and good, ultimately they will be good human being, and they can contribute significantly in nation building. That is why policy has put emphasis on this aspect. Then second thing, now all over the country, we are highlighting on fundamental duties. Honorable Prime Minister is putting a lot of emphasis on this, and that is most important. Why? What problem we are facing now? All the time we are fighting for the rights. We know our rights, and
we are not conscious of our duties and responsibilities. If we can make our children conscious of their duties and responsibilities, and if they will be conscious of the responsibility, not only from general point of view, even the constitutional obligations, constitutional values, then definitely they can bring about change, because they are the future. We are preparing our children for they are going to the future citizen. And if we can take care of this duties, but fundamental duties, because in the vision it has been mentioned that we have to promote fundamental duties. And why policy that the committee has realized that the fundamental duty is more important. If we can make our children conscious of their duties, then they will not fight for the rights. Automatically, everybody will enjoy their rights, and society will be very peaceful, and we can create a different type of society. So that part also we have to take care of, and that should be reflected in our teacher education program. So similarly, when we are talking about the other aspects, particularly since we are in 21st century, and we cannot live in isolation, and we have to depend upon others, and we should also know, our children should know what is happening in other countries. That is why what we have to do, that we have to help our children to understand what is happening in other part of the countries. And when we say this, because the problem is now UNESCO is putting a lot of emphasis on sustainable development, on global citizenship, because that our policy has taken care of that, the development of the global citizenship, sustainable development, human rights. So all these have been reflected in the vision of the policy. So when we are going to do something, it may be school education, it may be higher education, it may be teacher education. We have to take care of the vision, because this vision will guide us. Keeping in view the vision, we can prepare our teacher education program. And then we'll go to the second part, that the stages. So because we all know that in NEP 2020, we say that our school education is going to be of 15 years of duration. Because now what we have 12 years of schooling. Now it is going to be 15 years. And when it will be 15 years, we also need teachers for that. Sorry, 1 minute, that there is some problem in the light. 1 minute, please. Okay. So when we are going to discuss about the stages, what the policy has recommended, that we are putting a lot of emphasis on foundational stage, because that is most important. Maximum brain development takes place during this period. Around 85% of brain development takes place during this period. And what has been recommended, 3 years of school education, the preschool education will be integrated with the class 1 and 2. This will be one stage, this will be the foundational stage. And when this will be the foundational stage, we need teachers for this foundational stage. What is happening practically in our schools where preschool education are there, they're extending class 1 to preschool, but that is not the correct approach. And we have to understand the developmental characteristics of our children, keeping in view their need, their requirement. We have to provide education which will be age appropriate and stage appropriate, so that it will not only help in their cognitive development, it will help in their socio-emotional development of socio-emotional qualities. That means in holistic development, that is most important. So that is why now we have come out with the curriculum framework, and now we are preparing textbooks. And accordingly, we should prepare teachers for this stage, because this is the most important stage, and our teachers should understand what are the developmental characteristics and what role they have to play during this early stage. That is most important. Otherwise, it will be very difficult to implement this, because what problem we are facing, our children are not having the basic skills and competences. That is why we all know, in most of the time it is coming in the newspaper, class 7 children are unable to solve the problem of class 3, and class 5 children are unable to read the text of class 2. That means there is some gap. And even our NCERT National Achievement Survey also put emphasis on this. Now 21
that in 2021, the survey, what has been conducted by Ministry, National Achievement Survey, you know that average score of class 10 student is 38%. Average score of class 10 student is 38%. Average score of class 8 student is 42%. Average score of class 5 student is 49%. Average score of class 3 is 59%. You see, and if the gap in when we say in class 10 it is 38, and in board exam our students secure very good mark around 90%, 95%, 100, 80%, and you see the gap why it is happening. And in newspaper it is coming, students are unable to solve the problem what is required for that particular class. That means there is some gap, and our children are really poor in their skills and competency. That means they are not having the required literacy and numeracy skills. That is why policy has recommended to set up a commission to take care of this literacy and numeracy skill. And already Government of India has set up the commission. Now Niput Bharat is there. And now we have already come out with this curriculum framework. And focus is on development of skills and competences. And that is the most important thing that should be reflected in teacher education program. That should be linked to the teacher education program. We need teacher for the foundation stage. And we know what are the weakness or what is the strength of our program. And keeping in view that we should bring about corresponding change in teacher education program. Similarly, when our children will go to the next stage, the preparatory stage, and for them also we need teacher. Now we have teacher, but what actually we are doing, we are trying to cover the syllabus. And when we're covering the syllabus, and we think our job is to just to help the student to secure good mark in exam, and we know these marks are not going to solve the purpose in 21st century. And that is why what has been recommended that in preparatory stage that we have to bring about change in our pedagogical process. When we say change in pedagogical process, that means what type of classroom we expect. It will be more participatory. It will be more collaborative, because we all know if there is more social interaction, then there is a better learning. And we have to encourage social interaction inside the classroom. Let children work in group, let them share their experiences, let them get opportunity. We have to provide them opportunity to exhibit their talents, and let them perform, let them create, let them innovate, let them do something inside the classroom. They should not be passive listeners. That pedagogical reform we need in the preparatory stage, and that should be reflected in this teacher education program. And we should also know our job is not just to cover the syllabus, just to help students to secure good mark. We have to develop their skills and competencies so that there will be holistic development and they can contribute significantly in nation building. Then the next stage, what policy has recommended, that is the middle stage. And now we are going to introduce vocational education from class 6 onwards. And why it is so? Because what data we have now, currently we don't have vocational teachers. And the way we are implementing this vocational education in our school education, it is very horrible, because we have separate vocational stream and we look down vocational education. And what we feel, the students who are not performing well in general education, let them go to vocational education. Parents look down vocational education, teachers look down vocational education, society look down vocational education. But if you compare the data that is there in the policy, that means in our country, only 5% of children, 5% of students are coming through formal vocational education. Whereas in South Korea, 96% of students are coming through formal vocational education. In Germany, it is 75%. In USA, it is 52%. And why in India, it is only 5%, and India is going to be the youngest country in the world. And we are going to have the large number of youth in our country. If you are unable to develop their skills and competencies, if we will not make them proficient, then what they will do, they will not be asset to this nation, they will be liability. That is why what policy has recommended, we are going to
integrate this vocational education from class 6 onward. That vocational education will be an integral part of general education. There will be no separate stream for vocational education. And that means from class 6 onward, students will be exposed to vocational education, and they will be oriented about vocational education when they will go to class 9. That means for class 9, 10, 11, 12, 4 years. Out of they will select a vocation of their choice, and as per their aptitude, as per their interest, and will not impose them that you take this one, take that one. They, because from the class 6 onward, they are already exposed to different vocation, because they will visit the local community, local experts also visit school, and there will be proper interaction among the school, the experts from the locality, and from the teachers and students from the school. So that means this is another area that is going to bring about a significant change in our teaching learning process, and also in our school education program, as well as in teacher education program, because we need teacher for vocational education. And purpose of vocational education not only just to help our teachers students to acquire mastery over the vocation. We have to develop dignity of labor. That is most important, because we now what we do, we look down and then this is this work is inferior. That dignity of labor should develop. So that we are going to introduce in our school from this middle stage, and accordingly there should be corresponding change in teacher education program. Otherwise it will be very difficult, because we cannot prepare teacher. If we cannot prepare teacher for our school education, keeping in view the recommendation of NEP 2020, then our teacher education for very purpose of teacher education will be defeated. That is why we should take care of that. What is the need? What is the requirement? What is our weakness? And which area we have to strengthen? That keeping in view that we should bring about corresponding change in teacher education program. Then the next stage, secondary stage, what the policy has recommended, that means curriculum will be competency based. Why I gave you the example, why 38% in class 10, average score is 38%. Why they have scored 38%? The sample was 36 lakhs, 3.6 million students were selected from all over country, not only from government school, but from private school, from best English medium schools, CBSE, that affiliated schools, Kendriya Vidyalaya and Navodaya Vidyalaya. And there, the average score is 38%. And why? Because this test, what we have used to assess their performance, that learning level, that is based on the learning outcomes what NCERT has developed. And that is mostly competency based. But when students secure good mark, that means in exam, class exam, in board exam, they secure good mark, because that is mostly content based. That is why now time has come. We have to make it competency based. What policy has recommended? Policy has recommended curriculum will be competency based. Examination will be competency based. And it will be very flexible. There will be no watertight compartment between science, social science, and commerce. And there will be no watertight compartment between vocational education, vocational education and general education, and no watertight compartment between this curricular, co-curricular, and extracurricular. Because policy put a lot of emphasis on holistic development, and a lot of flexibility is going to be introduced. And along with that, it will be competency based, and good number of new subjects will be introduced, because now we know how this artificial intelligence is going to bring about a change in the entire system. And we are talking about coding, we are talking about machine learning and blockchain. Many new subjects are going to be introduced at the school stage. So a lot of flexibility, and it will be competency based. Then what in secondary stage is going to play a very significant role, because in what is the problem? We are talking about multiple intelligence, but in our school system we promote only this logical and mathematical intelligence. Child is poor in math, we keep the level, you are dull, but we don't try to find out what are the potentiality the child is having. That now time has come, we have to promote this multiple intelligence, and we have to see the strength of the child. Child may be poor in math, we have to find out what are the other potential the child is having.
If the child may be poor in math, but child may be rich in sports, or maybe rich in music, maybe rich in leadership, leadership quality. So that aspect we have to find out. So that is why we need a complete transformation in our teacher education program. So we can prepare right type of teacher who will take care of all these what has been recommended by NEP 2020. Then I will come to the second part, that is that what are the recommendation for curriculum, pedagogy and assessment. That is most important, because what has been recommended that the changes we need in curriculum, changes we need in a pedagogy, in our pedagogical process, changes we need in our assessment process. And if we expect a change in our curriculum, pedagogy and assessment, then we also need corresponding change in teacher education curriculum, pedagogy and assessment. Then there will be balance, there will be matching, and then only we will be successful in preparing good teacher. Now that is why when we are talking about this curriculum that I have highlighted, that it is going to be competency based, good number of new subjects will be introduced, and will measure competency, and our job will not just to help the syllabus, to cover the syllabus, rather our job will be to develop the skills and competencies so that they can be good citizen of this country. So that is why that we are going to have a different type of curriculum, because curriculum that NCF is in the process when it will come out, and based on the guideline, because it is being developed keeping in view the recommendation of NEP 2020, and based on the guideline of NCF, will come out with the textbooks and syllabus, and that will bring about the change. And accordingly, we have to bring about change in the teacher education program. So that our teacher will put emphasis on the development of skills and competency, because all the time we're talking about 21st century learning skills. We are talking about that we are all the time discussing our children should develop the problem solving ability, critical thinking, creativity, communication skills, etc., so that they can adjust effectively in the changing scenario. Life skill is more important, and all these should be reflected in teacher education program. Our teacher, that our curriculum should be holistic, so that teacher really can implement all the recommendation of the NEP 2020 inside the classroom. Classroom process will be more vibrant. That is why curriculum is going to play a very significant role. And when we're talking about the curriculum not in isolation. Curriculum includes pedagogy and assessment. And all these are integrated when that curriculum includes pedagogy, and also pedagogy includes assessment, because all these are interdependent and integrated. So that is why we have to understand what policy has recommended. Policy has recommended that should be reform in our pedagogical process. When there will be reform in pedagogical process in school education, there should be corresponding reform in our teacher education program, particularly in the pedagogical process, what our children are doing, particularly in our teacher education institutions. What skills are we covering the syllabus, what is there, or we are really helping them to develop the required skills and competencies so that they can help our students to become good citizens of this country. They can help our students to become good human beings. That is most important, because in the vision it is clear, Indian culture, Indian ethos, Indian value system, that should be reflected in teacher education program, so that teacher will prepare students accordingly, and ultimately will be in a position to prepare good human being for our society. That is why what has been recommended in NEP, that the pedagogical reform in pedagogical process, that means particularly now we are talking about experiential learning. We should not cover just the syllabus, because what happened, I will give the example of when we develop this NCERT textbook after this NCF 2005, we have included many box items in our textbooks, and in a box item we have suggested many activities. But normally what happens, some research studies have been conducted, teachers try to cover the content what is there. Teachers are reluctant to conduct different activities inside the classroom, what is there in the box item. I'm not generalizing. Some teachers do, some good teachers are there, they do, but some teachers, they just cover the content, what is there in the textbook.
But what is the purpose of including these box items? That means children will be involved, they will be engaged, and they will perform different activities. They will get opportunity to exhibit their talents. But that we are not doing. And that is why now NEP 2020 has recommended that there should be experiential learning. Let children experience, and we have to provide variety of experiences to our children and variety of exposure to our children, so that they can construct their own knowledge. They will get better experience. And that is why policy has recommended there should be art integrated learning. There should be ICT integrated learning. There should be sport integrated learning. There should be storytelling as pedagogy. And when policy has recommended all these for school education, and to implement all these in the school education, we have to bring about corresponding change in teacher education program. When you are talking about art integrated learning, that art integrated learning should also be included in teacher education program. When we are talking about ICT integrated learning, our teachers should be familiar with this ICT integration. ICT integration doesn't mean just converting the printed material into digital material. ICT integration means it should be properly integrated with pedagogy, and it should help in better social interaction, better collaboration. And our students should be in a position to use different ICT tools to share their experiences with others. Let them write their blog, let them share their experiences, let them use different social network services and for better learning. But we can create a very conducive learning environment by integrating different ICT tools. For that, we have to empower our students and we have to empower our teachers. So teacher education program should take care of this. Teacher education, that means that our teacher educators should be very serious about this, that how ICT can be really integrated into teaching learning process, particularly this technology should be integrated with the pedagogy and content. Then only will be successful in implementing this ICT integrated learning program. And along with that, now we are talking about physical education, health education, because that is another dimension that is most important, and that is totally neglected in our school education. And also in teacher education, we don't bother for that. In teacher education, our focus is on this internship, or earlier we were calling it practice teaching, how to teach, how to deliver, but we don't take care of this. But now time has come, we have to make our teaching, learning, sports integrated. That means that means we have to take care of physical education while providing them different experience, exposure in the playground. We should help them to develop some good qualities, because actually our children learn many things from the playground. When we play, we make ourselves self-discipline, and that fellow feeling, belongingness, teamwork, collaboration, cooperation, all this develop in the playground, and that is required for holistic development. And that is why what policy has recommended that should be sport integrated learning. And when we are going to make it sport integrated in school education, that should be reflected in teacher education program, and they should try to understand this process. Then only will be successful in implementing all this. Then similarly, about this storytelling pedagogy, that means that we all know children are fond of listening stories, and we all are fond of listening stories, and that should be integrated. So this is the pedagogical process what the policy has recommended, that should be reflected in teacher education program very seriously. Then only will be successful in preparing good teacher. And the most important thing that what I would like to highlight, that is assessment, because that is the key. If really we want to change in our system, we have to bring about change in the process of assessment. Then only we will be successful in bringing about change, not only in our school education, but also in teacher education program. So that is why assessment, when we say assessment, it is not assessment of learning. What policy has recommended, assessment of learning, that we all are familiar. We conduct assessment at the end of the session, and we give our judgment, but that is not going to help our student to improve their learning. Then we talk about the assessment for learning. Assessment for learning, that is, we conduct assessment in between just to give feedback. Normally, we conduct after completion of one unit, or after 3 months, 4 months, 2 months, whatever it may be, some time duration. Then we give them feedback. Now, question is, why we wait for 3 months to give them feedback? Why not immediately? That is why the new concept
that is assessment as learning, that is being highlighted, that has been reflected in NEP 2020. Assessment as learning, let children reflect on their own learning. When they will get opportunity to reflect on their own learning, they will know their strength as well as their weakness. And that should be reflected in teacher education program. And it is that assessment should be continuous. Assessment should be holistic. That is, and the assessment should be 360-degree. And our students should be involved in the process of assessment. What policy has recommended? There will be peer assessment. There will be assessment by teacher. There will be self-assessment. And assessment will be transparent. Even parents may be involved in the process of assessment. And if we can do this, then we can bring about change. That is why we're putting a lot of emphasis on holistic progress card. Now we have progress card in our schools, but that progress card reflects only the marks what our students secure in different school subjects. And we give it to the student, they get the signature of their parents. But now we are talking about holistic progress card, which will not only include the marks, but it will include their performance in other areas, in affective and psychomotor areas, along with the cognitive. That will be holistic. When they will go to next class, they will go with their progress card and will use artificial intelligence to maintain this progress card. Because in a holistic way, we are planning so that when we prepare this holistic progress card, all the activities, not only their performance in different subjects, how their performance in other areas, particularly their socio-personal quality, their leadership qualities, their performance in sports, performance in music, everything will be, because all these are good qualities, are essential for good human being, and that will be reflected in the holistic progress card. So when we are preparing holistic progress card for school, and we should take care of in our teacher education program, how we are going to assess the personality, overall personality of our children, what strategy we should follow so that we can really make proper assessment. That should be reflected in teacher education program. And that is keeping in view all that the recommendations, what policy has recommended. Policy has recommended our teacher education should be 4 years of duration, and it should be multidisciplinary. What is the purpose? Now we have 2-year B.Ed program. Earlier 1 year, now we have 2-year B.Ed program. And also 4-year program. We have been experimenting with this 4-year BSc B.Ed program since 1963, when RIs were established. Then we started the 2-year program in 99-2000 in NCERT. Then Government of India has accepted this program in 2014, 4-year and 2-year. Now it has been recommended that only 4-year program till 2030, all the programs will be there, but after 2030, only 4 years program will be there. Though it has been recommended 2 years program will be there, those will be completing 3 years graduation, and 1-year B.Ed program will be there, those will be completing 4-year graduation. But focus is on now this integrated program, and only the multidisciplinary institutions will run this 2-year program and 1-year program. And why we're putting so much emphasis on multidisciplinary approach? Because our focus is on development of skills and competencies. And when we are talking about the pedagogy, it is not only science pedagogy, language pedagogy, social science pedagogy, or mathematics pedagogy. We have to go beyond this, because now we are talking about skills, and when it is content oriented, this pedagogy is okay. But when it is competency oriented, we have to cross the boundaries, and we have to break this watertight compartment, and we have to focus on this multidisciplinary approach. And from the beginning, that early stage, that means when students will join this teacher education program after +2, particularly this 4-year program, that they will learn both the content and pedagogy. And that means from the beginning, 4 years, and they will go for internship for a longer duration, interact with the school, they will observe school, there will be multicultural placement. Many recommendations are there, and practically in our institutions, we are doing that. So if we do that, then definitely there will be proper linkage between school education and teacher education. Now the linkage is missing. We have to re-establish the linkage between teacher education and school education, and also school education, higher education. Then only we'll be successful in developing, preparing good teachers.
and then we can bring about reform in our teacher education program. That is why I have highlighted the academic part, because other things that we know it is there in NCTE guidelines, but academic part, that is most important. If really we can prepare our teachers, keeping in view the recommendation of NEP 2020, then definitely we can implement NEP 2020 in our classroom. We can make our classroom more vibrant. We can really help our children to become good citizens of this country, good human being, and also ultimately global citizen. That is our culture, because all the time we say Vasudeva Kutumbakam, Sarve Bhavantu Sukhina, and that is our culture that should be reflected in our teacher education program. Then only we can bring about change in the entire system of education. So I think that is my viewpoint, and I'm very happy to be a part of this program, and I have shared my experiences with you all, and I hope you'll take care of this, and I wish you all the best. Thank you. Yeah, thank you so much, sir. Now I request Mr. Rasim Haroon to kindly take over for the further proceeding. Over to Mr. Rasim. Mr. Rasim, kindly unmute yourself, please. Hello, am I audible? Yes, sir, you're audible. Okay. Thank you, Professor HRUSHIKESH Senapathy, sir. It was a thought-provoking session. And sir, your years of experience and researches were reflected throughout your presentation. It was a thought-provoking presentation, which appealed for the keen attention of teacher educators of our country to transform the system in various ways. And it was pointed towards the importance of academic transformation, which will further leads to transformation of all other dimensions of teacher education programs of the country. And here we are moving to our next session, our thematic session, and is led by Dr. BANWARI NATIA ji, the chairperson of NRC and NCTE. Sir, mic is over to you, and we are waiting for your session, a critical evaluation of implementation on guidelines in teacher education. Thank you, sir. Thank you, sir. Respected Senapati ji, Dr. Sripal Singh ji, President, PACE, Devanandan ji, and Sarabjit ji Kaur, and all the participants in this webinar. First of all, I thank you very much for organizing this seminar, because this is very important time to think all of these things. Teacher education, not only teacher education, but whole education is in transitional phase. And at this stage, we have to take care of all these things which Honorable Senapati ji have explained. All the academic points were explained by Senapati ji sir, and I can't explain better than him. So, and I am connected with only regulatory issues of teacher education. So I will keep myself confined with the regulatory process. If you can see the recommendations of NEP, the most discouraging recommendation is that teacher education is not doing well in India. The institutions are selling degrees. They are not doing well. From the very beginning, जिस दिन से ये आया statement, उस दिन से ही मैं इसका विरोध करता रहा हूं कि टीचर एजुकेशन जो जितना भी हम वर्णन करते हैं, चाहे कोई एजुकेशन हो, वो सब इंस्टीट्यूशन ही तो देंगी. केवल पॉलिसी में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें लिख देने से
या बहुत बढ़िया करिकुलम बना के देने से तो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। वो सारी चीजें लागू करना का काम तो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के पास ही है। अनफॉर्चुनेटली टीचर एजुकेशन के जितनी इंस्टीट्यूशंस यहाँ इंडिया में डेवलप हुई, प्रैक्टिकल बात यह है जो मैंने महसूस किया है कि जो कुछ इन्होंने कहा है वो 75% सत्य है। 75% इंस्टीट्यूशन ऐसी हैं जो वाकई डिग्री सेल करने का काम करती हैं, बट रिमेनिंग 25% इज आल्सो इंक्लूडेड इन दीज विद दीज इंस्टीट्यूशंस। तो अब रेगुलेटरी प्रोसेस के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि किस प्रकार से इन इंस्टीट्यूशंस को जैसे रिकमेंड किया गया है कि या तो वो अप टू द मार्क आए या उनको बंद किया जाए। जैसा एनईपी चाहती है या तो वो उस तरफ आए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें उस तरफ, अन्यथा दे शुड बी शट डाउन। दिस इज द क्लियर रिकमेंडेशन बाय एनईपी 2020। अब प्रॉब्लम एनसीटी के सामने ये है कि हाउ दिस रिकमेंडेशन कैन बी implemented, because you can't shut down the 75% institutions. Secondly, in future only 4-year program will be there, and now except 784 institutions, all institutions are having 2-year program. तो 18,000 में से केवल 784 इंस्टीट्यूशन ऐसी हैं जिनके पास 4-year प्रोग्राम है, और वो भी अपडेट जिस रूप में आईटेप चाहते हैं उस रूप में नहीं है। क्योंकि आईटेप की पहली शर्त है ये, और जो जरूरी भी है, अभी सेनापति सर ने एक्सप्लेन भी किया कि इंस्टीट्यूशन शुड बी मल्टीडिसिप्लिनरी, एंड इफ यू लुक ऑल these 784 institutions who are running this 4-year course, I don't think that they are having more than 200. There will be only 200 colleges or 250 colleges who are multidisciplinary. So you can say कि यदि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है तो सारी कॉलेजेस 18,000 में 300, 400, 500 कॉलेज छोड़ दीजिए, बाकी सारी कॉलेजेस इस तरह की हैं जो या तो अपने आप को अपडेट कर लें या उन्हें बंद कर दिया जाए। अब इतनी इंस्टीट्यूशंस को बंद तो नहीं किया जा सकता, तो अब इनको अपडेट किया जाए। इसके लिए एनसीटी ट्रांसफॉर्मिंग के लिए प्रयास कर रही है कि ट्रांजिशन करें ये, और इनको समय दिया जाए, उस समय के अंदर ये अपने आप को बदल के एनईपी के अनुरूप लाएं। ये विचार अभी एनसीटी में चल रहा है, लेकिन आप तो मेरे से ज्यादा जानते हैं, बिकॉज यू आर द प्रिंसिपल्स ऑफ दीज कॉलेजेस, कि उन कॉलेजेस की स्थिति क्या है, क्या वो मल्टी डिसिप्लिन में अपने आप को कन्वर्ट कर सकती हैं, क्या वो 4-year कोर्स वहां पर लेने की स्थिति में हैं, क्या वो नेक कराएंगी, क्या उनके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो एनईपी चाहिए वो होगा, एंड हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज नीडेड फॉर दैट। तो इसलिए दिस इज द बिग प्रॉब्लम विच education sector, institution sector is facing, that how can be these institutions can be converted into multidisciplinary institutions. अभी जो आईटेप पे दिया गया है, नया आईटेप जो पायलट बेसिस पर दिया गया है, उसको इसीलिए कॉलेज
जो यूनिवर्सिटी की कॉलेजेज हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए प्रयास किया है कि उन्हीं में दिया जाए। हम कोई सेपरेट कॉलेज एजुकेशन की हो ये जरूरी नहीं है। मल्टी डिसिप्लिनरी में जैसे अन्य डिसिप्लिन वहां चलते हैं वैसे एक टीचर एजुकेशन भी चल सकता है। तो अभी जो प्रोग्राम दिया जा रहा है वो सब इंस्टीट्यूशंस तो हैं इस तरह की जहां मल्टी डिसिप्लिनरी भी है, नेक भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बिकॉज दे ऑल आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज। लेकिन ये अपने आप में बहुत भारी समस्या है, भारी प्रॉब्लम है कि वो टू डू विद द existing institutions who are not multidisciplinary, you are not which are not having 4-year program, and whether they can invest so much, whether they're going to develop so much infrastructure. This is the problem. 2-year diploma course की तो समाप्ति होना है। हरियाणा गवर्नमेंट ने तो ये निकाल ही दिया आदेश कि 17-23-24 से DLED will be not there. No admission will be there in DLED colleges and no institution will be running DLED course from session 23-24। ये ठीक भी है क्योंकि DLED तो पूरी तरह से डिस्कार्ड कर ही दिया गया है। 2-year डिप्लोमा कोर्स तो है ही नहीं, तो फिर वो 30 तक ले जाएंगे तो जो ये बच्चे तैयार होंगे व्हाट विल बी देयर फ्यूचर, कैसे उनको फिर ब्रिज कोर्स कराएंगे, क्या कराएंगे, 2 साल को 4 साल में कैसे बदलेंगे, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द। इसलिए इस कोर्स को तो जितनी जल्दी हो सके उतना फेज आउट कर देना चाहिए। 2 ईयर और 1 ईयर वाला कोर्स जो रिकमेंड किया गया है तो B.Ed आज भी 2 ईयर का है और 2 ईयर में जो 3 साल ग्रेजुएट करके आते हैं वही एडमिशन लेते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी जो 3 साल की B.Ed करके आता है उसके लिए 2 साल का B.Ed रिकमेंड किया गया है और जो 4 साल का ग्रेजुएशन करके आएगा उसको 1 साल का कोर्स रिकमेंड किया गया है। तो जो B.Ed की 2 साल के कोर्स की इस वक्त संस्थाएं हैं, यदि वो मल्टी डिसिप्लिनरी में अपने आप को कन्वर्ट कर लें तो वो संस्थाएं जीवित रह सकती हैं। उनको केवल मल्टी डिसिप्लिनरी डेवलप करना है, बिकॉज इन फ्यूचर 4-year इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा तो दैट विल बी द ड्यूअल डिग्री, और ड्यूअल डिग्री में आपको जो कोर्स लेना चाह रहे हैं उससे संबंधित डिसिप्लिन तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए B.Ed जितनी 2 ईयर की हैं उनको मल्टी डिसिप्लिन में यदि वो कन्वर्ट कर लें तो उनके सामने कोई संकट नहीं है। लेकिन आज की तारीख में हम देखें तो मोर देन 90% कॉलेजेज आर स्टैंड अलोन कॉलेजेस। अब वो स्टैंड अलोन कॉलेजेस कंपोजिट की परिभाषा यदि 2014 में जो दी गई थी उस परिभाषा में परिवर्तन नहीं होता तो ये 90% कॉलेज B.Ed वाली मल्टी डिसिप्लिनरी होती, बिकॉज बेसिक कंसेप्ट ऑफ composite doesn't mean the 2 courses of teacher education, but originally it was defined that these institutions must be having any degree course, either commerce or either science or arts. But I don't know how it was done. After 1 year, a clause was inserted in the regulations that those institutions who are having multi-course of teacher education will also be treated as composite institutions. और इस क्लोज ने, आपको एक बात और बताऊं बड़े आश्चर्य की जो मुझे होता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं,
ये एक्ट हमारा रेगुलेशंस हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बना है, और ये जो कंपोजिट को जो चेंज किया गया है परिभाषा, वो केवल अंग्रेजी में चेंज की गई है, उसको हिंदी में नहीं चेंज किया गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर है कि यदि हिंदी और अंग्रेजी में डिफरेंस हो तो अंग्रेजी को माना जाए। बिकॉज ऑफ दिस, ओनली दिस रीजन, आज 90% of B.Ed colleges are not multidisciplinary. वरना ये समस्या 2014 के बाद ही सोल्व हो जाती कि यदि या तो अपने आप को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाते वो और अपने आप बंद हो जाती, लेकिन कंपोजिट की इस परिभाषा के कारण ये कॉलेजेस आज भी ये हैं। तो देखिए, DLED कोर्स है, उन सब इंस्टीट्यूशंस का कोई फ्यूचर नहीं है, और 2030 तक उनको चलाने में भी कोई लाभ नहीं है। सरकार के सामने हमने तो प्रपोजल दिया है कि जैसे हरियाणा सरकार ने किया वैसे एक जनरल होना चाहिए कि अगले साल से नहीं होंगे, क्योंकि उन कोर्सेज का कोई फ्यूचर है ही नहीं। उनको आप कितना ब्रिज कोर्स कितना देंगे? सीनियर सेकेंडरी पास करके फिर 2 साल का व्यक्ति DLED करता है, उसको आप कितना कैसे ग्रेजुएट बनाएंगे और कैसे फिर वो मल्टीडिसिप्लिनरी में जाएगा, क्या होगा? इसलिए इस कोर्स को तो बंद कर देना उचित है। अब DLED कॉलेज, DLED जो इंस्टीट्यूशंस है, उनको भी ऑप्शन दिया जा सकता है कि if they can convert themselves into 4-year degree course and multidisciplinary institution, they can run their institutions, but I don't know how far it will be possible for them. एक और परेशानी जो मैंने महसूस की है वहां, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं, इट इज नॉट रेगुलेटरी एंड ऑल दीज थिंग्स, कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इसमें अपनी एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार 92% इंस्टीट्यूशंस आर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, और यदि आप DLED में डाइट्स वगैरह को बंद कर देते हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे और बंद हो रही हैं, तो 95 to 96% इंस्टीट्यूशंस आर run by the private entrepreneurs. Only 4%, 3% colleges are in the public sector, or you can say government institutions or government aided institutions. इन 95% में भी एक बात और है जो टीचर एजुकेशन के साथ बहुत परेशानी वाली बात है, कि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आर मिडिल लेवल एंटरप्रेन्योर्स या लोअर लेवल एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा चलाई जा रही हैं। कोई बहुत बड़ा ग्रुप इसमें नहीं आया है। टीचर एजुकेशन में बहुत बड़े ग्रुप्स ने एंट्री नहीं ली है। अब चूंकि ज्यादातर कॉलेजेस आर रन बाय द मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पर्सन्स, देन this is all the problem whether they will have sufficient investment to convert them in multidisciplinary. It will also be seen, because to convert multidisciplinary we need additional land in huge or other infrastructure will also be needed. Then how they can be converted in this, that is the problem. ये आप लोग प्रिंसिपल हैं, अब आप भी अपने अपनी संस्थाओं के बारे में सोचिए कि how they can convert themselves into multidisciplinary institutions. NCTE की कोई मंशा नहीं है कि इन इंस्टीट्यूशंस को बंद किया जाए, बिकॉज NCTE भी देख रही है कि they are having much investment in these institutions, much employment. आज कितने लोग इसमें लगे हुए हैं, what will be their future? This is also before the NCTE administration. But if you want to implement NEP, then you have to do this thing. एक और खतरा मुझे नजर आ रहा है
व्यवहारिक बात करें तो you have recommended, NEP has recommended 4-year, 2-year and 1-year course. Those persons who are graduate, they can go through only for 2-year course. And that will be basic, they will cover basic eligibility to become teacher educator or to become teacher in the schools. तो इस पैटर्न में आज भी ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का कोर्स है बीएड का, और यदि 4 साल का है तो फिर 1 साल का कोर्स है। तो अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इन दोनों प्रोसेस में अंतर क्या है, और यदि आप इन जो एकेडमिक फील्ड के लोग हैं वो ज्यादा जान रहे हैं, रेगुलेटरी को तो कोई पता नहीं है इन बातों में, मेरे को कुछ पता भी नहीं है ज्यादा। मैंने बहुत सोच के बहुत डिस्कशन करके भी विद्वानों से देखा है कि यदि टीचर एजुकेशन में एक तरफ हम कह रहे हैं कि 4 साल का कोर्स ही रहेगा, दूसरा हम कहते हैं कि बीकॉम या बीए करने के बाद 2 साल का भी कर सकता है वो, और 4 साल के बाद 1 साल का भी कर सकता है। तो जब 2 साल और 1 साल के कोर्स उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी के लिए मान्य है, तो व्हाई ए पर्सन विल गो फॉर 4-year कोर्स? ये आईटेप तो मुझे लगता है कि फिर इससे बहुत परेशानी में आएगा। जब इन दोनों कोर्सों को हम इसके इक्विवेलेंट मान रहे हैं, क्योंकि आप देखिए आईटेप में 4 साल बिताएंगे आप, ड्यूअल डिग्री है ठीक है, लेकिन उस आईटेप के 4 साल के बजाय आप 3 साल का ग्रेजुएशन करें और फिर 2 साल का बीएड करें तो वो 5 साल हुआ। तो हमारे देश में 1 साल की कीमत तो कुछ है नहीं कि 4 साल के तुरंत बाद रोजगार मिल जाएगा, तो उसका 1 साल बचा रहे हैं हम, लड़के का 1 साल बचा रहे हैं, तब तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही as soon as he will get the B.Ed degree, he will get employment। वो स्थिति तो है नहीं। तो उसके लिए 1 साल कितना महत्व रखता है, उसके बजाय आप देखिए वो 3 साल का ग्रेजुएट कोर्स करेगा, बीएससी करेगा या बीए करेगा या बीकॉम करेगा या कोई और नाम जो आएगा सामने, अभी तो पता नहीं, वाटर टाइप डिपार्टमेंट नहीं कर रहे हैं ये, तो जो भी नाम आएगा, तो 3 साल बाद वो करेगा 2 साल का कोर्स। तो वो जो 3 साल में डिग्री लेगा, बीए बीएससी हो, और इधर बीएड के साथ वो बीएससी की डिग्री लेगा, उसमें बहुत अंतर होगा। चाहे आप ड्यूअल डिग्री तो कहिए इसको, ये तो ठीक है ड्यूअल डिग्री होगी ये, तो पेपर पर तो इट विल बी ए ड्यूअल डिग्री, लेकिन प्रैक्टिकली बीएससी बीएड किया हुआ लड़का बीएससी का, और उधर बीएससी डायरेक्ट किया हुआ लड़का, उसकी बीएससी की डिग्री में बहुत फर्क होगा। तो इसलिए ये कुछ भी हैं इस तरह की स्थितियां जिसके बारे में आप टीचर एजुकेटर्स को बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए। अभी एक यूजीसी का और ड्राफ्ट आया है कि आफ्टर डूइंग 4-year कोर्स यू कैन बी रजिस्टर्ड एज पीएचडी स्कॉलर। इसका सीधा मतलब है कि पीजी करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे भी जो एमएड के बारे में एनईपी बात नहीं करता, इसलिए अपने मानते हैं कि एमएड चलेगा, लेकिन इसका फ्यूचर तो वही होगा जो यूजीसी में बाकी पीएचडी कॉलेजेस का या बाकी पीजी कोर्सेज का होगा। तो ये कुछ व्यवहारिक समस्याएं हैं जो एकेडमिशियंस को ही सोल्व करनी है। टीचर एजुकेशन अब केवल एक और नई थीम आ रही है कि अब केवल स्कूल एजुकेशन के लिए ही टीचर जरूरी नहीं होगा। थीम नई ये है कि पेडागोगी तो हायर एजुकेशन के लिए भी आवश्यक होनी चाहिए। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा या खुशी भी होगी, आश्चर्य क्या खुशी होगी, कि कुछ आईआईटीज कुछ एनआईटीज ने भी आईटेप के लिए अप्लाई किया है।
they also want to take this teacher education course of 4 year. But their concept is this कि education का part तो ठीक है, लेकिन pedagogy वो अपनी engineering की पढ़ाएंगे उसमें. Since these are the institution of excellence, तो वो अपना कोर्स बना सकती हैं, उनको छूट है अपना कोर्स बनाने की, अपनी डिग्री देने की. तो वहां विचार ये चल रहा है कि आईआईटी में भी पढ़ाने के लिए टीचर एजुकेशन यानी पेडागोगी पढ़ा हुआ व्यक्ति चाहिए. तो सब फील्ड में हायर एजुकेशन में भी एजुकेशन का आदमी चाहिए. ये विचार भी इस एनईपी के बाद आया है. उसके बारे में आगे क्या होता है, अभी तो 2-4 इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने आईटेप लेने के लिए एप्लीकेशन लगाई है. कुछ एनआईटीज ने भी लगाई है, कुछ आईआईटीज ने भी लगाई है. ये सब पायलट प्रोजेक्ट, हम फ्यूचर इसका क्या होगा वो तो इनको आगे पता लगेगा. लेकिन आप लोगों के लिहाज से बहुत सीरियस प्रॉब्लम यह है कि इफ यू आर नॉट एम्प्लॉयड इन multidisciplinary institutions, then you have to think that how your institution can be converted into multidisciplinary and what is needed for that. ठीक है, 2030 तक चलेगा वो ठीक है, लेकिन 2030 तक भी मल्टीडिसिप्लिनरी होना ही पड़ेगा. 2 टारगेट आप तय कर सकते हैं. देखिए, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो टारगेट उसका सेट है. मैं खूब मेंटेलिटी मैंने पढ़ी है एंटरप्रेन्योर्स की, जो स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, बीएड कॉलेज चलाते हैं. उनका ये है कि 2030 तक हमारा इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा आराम से, कितना हम और कमा लेंगे. ठीक है, 2030 में बंद होंगी, बंद हो जाएंगी. दे आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग. बट एज एम्प्लॉई, एज टीचर, क्या हम इस बात को अफोर्ड कर सकते हैं? दे कैन अफोर्ड. वो तो अपना जो पूंजी यहाँ से निकाल के और दूसरी जगह ले जाएंगे. इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होने लगी, बीएड कॉलेज में इतनी बाढ़ क्यों आई? बीएड कॉलेज में बाढ़ इसलिए आई कि इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुई, एमबीए कॉलेज बंद हुई, एमबीए में ज्यादा मांग नहीं रही. तो जो इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुई या एमबीए कॉलेज बंद हुई या अन्य किसी सेक्टर की कॉलेज बंद हुई, उन लोग सब टीचर एजुकेशन में आ गए. तो इसलिए प्रॉब्लम उन लोगों के लिए कम है जो संस्थाएं चलाते हैं. प्रॉब्लम हमारे लिए ज्यादा है जो उसमें सर्विस करते हैं या टीचर एजुकेटर हैं. तो इन सब बातों पर आप विचार स्वयं कीजिए. मल्टीडिसिप्लिनरी का ऑप्शन आपको मिलने वाला है. तुरंत कोई कॉलेज बंद नहीं होने वाली, चाहे वो डीएलएड हो, चाहे बीएड हो, चाहे अन्य प्रकार एमएड कॉलेज हो, तुरंत कुछ नहीं बंद होने वाला. लेकिन उन सब को हम मल्टीडिसिप्लिनरी में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, ये विचार हमें करना पड़ेगा. क्योंकि आज भी जो इस 784-800 कॉलेज चल रही हैं, इनमें आरईआईज को छोड़ दीजिए, जो 5, 6, 7 कितनी है मुझे पता नहीं, जो एनसीईआरटी से चल रही हैं, उनको छोड़ दीजिए. वो तो बिल्कुल परफेक्टली उनके यहाँ दोनों डिपार्टमेंट साथ साथ चल रहे हैं. लिबरल कोर्सेज के भी लोग हैं वहाँ और टीचर एजुकेशन के लोग भी हैं. लेकिन बाकी जो कॉलेज चल रही हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनमें लिबरल कोर्स का पुट इतना बढ़िया नहीं हो पा रहा. जैसे बीएससी बीएड है, तो बीएड का पुट तो ठीक है, लेकिन बीएससी का जो पार्ट है वो इतना बढ़िया नहीं हो पा रहा, और इसीलिए उनके पास ज्यादा संख्या नहीं हो पा रही, इसीलिए ये कॉलेज बढ़ नहीं पाई. तो ये भी एक सोचने का विषय है कि यदि 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स लेना है तो हमें मल्टीडिसिप्लिनरी होना ही पड़ेगा. 2 ईयर लेना है तो भी होना पड़ेगा, 1 ईयर लेना है तो भी होना पड़ेगा. तो एज ए टीचर, मैं भी टीचर हूँ, इस लिहाज से मैं इस समस्या के बारे में, ये समस्या आपके सामने रखता हूँ. ट्राई टू कन्विंस योर मैनेजमेंट that they should be converted into multidisciplinary institution. Try to convince your management that
केवल डिग्री देने वाली कॉलेजेस नहीं चलेंगी। इतना आगे जिस तरह का कंट्रोल सिस्टम डेवलप हो रहा है आईटी के कारण, अब तक जो हमने कर लिया ठीक है, लड़का आया एडमिशन लिया, फिर परीक्षा के टाइम ही आता है न टीचर रखने की जरूरत है, टीचर्स भी बेचारे परेशान हैं, 10 महीने रखेंगे उनको या बीच में नहीं रखेंगे तो भैया ठीक है 5,000 रुपए देंगे हम आपको, आप घर बैठिए आराम से, आने की आवश्यकता नहीं है। दीज ऑल आर प्रैक्टिसेस आई एम फेसिंग। तो अब वो नहीं चलने वाला है, मल्टी डिसिप्लिनरी होना ही पड़ेगा और पढ़ाना ही पड़ेगा, क्लासेस लगेंगी ही, क्योंकि नैक वगैरह ये सबको कंपल्सन हो रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपको इस बारे में विचार करना है कि हाउ दिस इंस्टीट्यूशन शुड सर्वाइव, हाउ आवर सर्विसेज एंड आवर एम्प्लॉयमेंट विल सर्वाइव, एंड व्हाट कैन वी डू फॉर द बेटरमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। अब हम जो एक बात बार बार करते हैं कि टू बिकम ए टीचर इज ए लास्ट ऑप्शन, या टीचर एजुकेटर भी कोई आदमी अपनी बहुत ज्यादा चाह से नहीं बन रहा। एमएड में तो बहुत स्थिति खराब है, एमएड की सीटें पूरी नहीं हो रही हैं, एमएड में आदमी आना नहीं चाहता, बीएड तो कर लेता है लेकिन एमएड में आना नहीं चाहता, टीचर एजुकेटर बनना नहीं चाहता। इन सब प्रॉब्लम्स के ऊपर भी विचार करना पड़ेगा, और जब तक एम्प्लॉयमेंट की स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक आदमी टीचर न तो टीचर बनना चाहेगा और न टीचर एजुकेटर बनना चाहेगा। टीचर एजुकेटर क्या बनने में सामान्य से ज्यादा समय लगता है, उसके बाद ज्यादा डिग्री होती है, ज्यादा नॉलेज होता है, लेकिन जब एम्प्लॉयमेंट मार्केट में हो जाता है तो उसको उसकी तुलना में बहुत कम मिलता है। ऐसे आप देखिए, वैसे सिद्धांत रूप से संविधान और कोर्ट का, न्यायालय का, इन सब का निर्णय है, हम भी मानते हैं, समाज भी मानता है कि एक तरह का काम की एक तरह की सैलरी होनी चाहिए। जब हम काम एक ही तरह का कर रहे हैं तो सैलरी अलग अलग क्यों? लेकिन देखिए आप गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में कितना बड़ा अंतर है। वही टीचर गवर्नमेंट में क्या मिलता है उसे प्राइवेट में क्या मिलता है। ये सब भी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर विचार हमें करना होगा, और हमें स्वयं सोचना होगा कि हम बाजार में अपने आप को किस प्रकार अपग्रेड कर सकें। मैं बाजार शब्द यूज कर रहा हूँ जानबूझ के, चाहे हम ये कहें कि साहब ये तो बड़ा नोवल धंधा है, बड़ा ये है, बड़ा पवित्र है, इसमें ये है, लेकिन मैं जानबूझ के बाजार शब्द यूज कर रहा हूँ कि हमें सबको डिग्री लेकर बाजार में ही आना है। एनईपी भी इस बाजारीकरण को रोक पाएगी मुझे नहीं लगता। तो हमें स्वयं को सोचना है कि हाउ कैन वी इंक्रीज आवर वैल्यू, हाउ कैन वी इंक्रीज आवर एम्यूनमेंट्स बाय लीगल या रेगुलेटरी के द्वारा। ये नहीं होगा। हर रेगुलेटरी बॉडी कहती है, लिखती है, उसके रेगुलेशन में है कि इतनी सैलरी होनी चाहिए, एज पर यूजीसी स्केल होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, लेकिन वास्तव में क्या होता है वो आप और हम सब जानते हैं। इसलिए टीचर एजुकेशन की स्थिति ठीक करने के लिए आप सब लोगों को लगना होगा, तब हम ठीक कर पाएंगे। और इमेज बदलने के लिए भी हमें ही लगना पड़ेगा। कोई भी चेंज कर सकता है, वो टीचर ही कर सकता है, वो त्याग करके भी चेंज कर सकता है। तो इसलिए मल्टीडिसिप्लिनरी में रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्वयं को ये सोचना है कि एप्लीकेशन किस प्रकार मल्टीडिसिप्लिनरी हो। एक बात और बता दूं मैं आपको, मल्टीडिसिप्लिनरी में केवल साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स यही नहीं है।
मल्टी डिसिप्लिनरी में आप किसी भी प्रकार का कोर्स आपके यहाँ चल रहा है, इंजीनियरिंग चल रहा है, मेडिकल चल रहा है, कोई कोर्स चल रहा है, लेकिन डिग्री कोर्स चलना चाहिए, डिप्लोमा कोर्स नहीं, डिग्री कोर्स कोई भी चल रहा है तो उसको आप मल्टी डिसिप्लिनरी मानेंगे। और अब तो जो थीम है इनकी एनईपी की, उसमें तो जो यूनिवर्सिटीज भी, जैसे संस्कृत यूनिवर्सिटी है, इट विल नॉट बी ओनली संस्कृत, उनको भी मल्टी डिसिप्लिनरी होना पड़ेगा। टीचिंग यूनिवर्सिटी आपके 3-4 बनी है अभी, उनको भी मल्टी डिसिप्लिनरी होना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट तो सभी क्षेत्रों में है कि उनको मल्टी डिसिप्लिनरी होना पड़ेगा। मेरे पास तो बताने के लिए जो था मैंने बता दिया। अब आपकी कोई क्वारी हो तो मैं जवाब दे सकता हूँ। Yeah, thank you so much. I request the participants to put the questions, if any. May I, ma'am? Sure, ma'am, sure, please. Very good evening, sir. It was really very informative and realistic session. सर ने हमारी जो आज के दिन में टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की कंडीशन है, किस मोड पे खड़े हैं, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो सारा बहुत अच्छे से क्लियर किया है। सर मेरी क्वेरी ये है कि अब जो हमें 4 इयर्स में चेंज होना है, IGEP के लिए अप्लाई करना है, तो फॉर द टाइम बिंग वो डिग्री कॉलेजेस को दिए जा रहे हैं या एजुकेशन कॉलेज भी उसके लिए अप्लाई कर सकता है? देखिए, जो 2 ईयर B.Ed वाली हैं उनको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो यदि मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाते हैं तो आपके एनईपी में लिखा है कि 2 साल का कोर्स उनको दिया जाएगा जो ग्रेजुएशन के बाद B.Ed करना चाहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें मल्टी डिसिप्लिनरी बेसिक बात है। यदि मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं है तब तो न 2 ईयर मिलेगा, न 4 ईयर मिलेगा, न 1 ईयर मिलेगा। अब आज की तारीख में जो मल्टी डिसिप्लिनरी इसमें लिखा गया है एनईपी में, लेकिन वो अनरियलिस्टिक बात है। वो आप लोग आपके इंस्टीट्यूशन करवा लेंगे, चेंज कोर्ट से करवा लेंगे या वैसे करवा लेंगी कि केवल 4 ईयर डिग्री कोर्स है इंटीग्रेटेड, वहीं 2 ईयर दिया जाएगा और वहीं 1 ईयर दिया जाएगा। तो ये मुझे लगता नहीं कि ये ज्यादा चलेगा ये बात। भाई ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का कोर्स हम नहीं लेना चाहते, 4 साल का, 2 साल का ही लेंगे हम तो। जब आपकी छूट है कि ग्रेजुएशन के बाद लड़का 2 साल का कोर्स करता है तो मैं 4 साल का कोर्स क्यों लूं? तो आज की तारीख में तो ये कंपलसरी है कि 4 साल जहां पर है इन आईटेप वहीं पर 2 साल का दिया जाएगा या 1 साल का दिया जाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की, बस बाकी समस्याएं तो सोल्व हो जाएंगी। बाकी आपके इंस्टीट्यूशन के सामने जैसी भी समस्या आएगी दैट विल बी सोल्व्ड। सर एक्चुअली हमारा एजुकेशन कॉलेज है, सेम मैनेजमेंट का डिग्री कॉलेज भी है, तो हमें मल्टी डिसिप्लिनरी होना दैट इज नॉट डिफिकल्ट। हम एक सिर्फ उसमें एक रेजोल्यूशन डालना मैनेजमेंट का जिससे वो दोनों का मर्जर हो जाएगा। सर व्हाट अबाउट एक ही जगह पर है? यस सर, हमारे बीच में एक दीवार ही है बस, वो भी एक गेट है ना सर। पर हमारा जो B.Ed है, B.Ed में एडेड पोस्टें हैं, उन पोस्टों का क्या होगा? ये B.Ed वाला जो 2 इयर्स कोर्स है, इसमें एडमिशन जैसे आपने पहले स्टार्टिंग में ही कहा कि नॉन अटेंडिंग है, हमारे पास सर सिर्फ 10 बच्चे हैं, 10 अब है। अगर हम नॉन अटेंडिंग नहीं करते तो ये हमारी कंडीशन है, हमारे पास इस सेशन में 10 ही रहेंगे सर। लेकिन उन 10 के साथ मैनेजमेंट ये 2 इयर्स कोर्स चला नहीं पाएगी क्योंकि 75% एड जो DPI से आती है, 25% एड स्टाफ को वो भी देना फिजिबल नहीं है। तो फाइनेंशियली इट्स अ ग्रेट बर्डन ऑन मैनेजमेंट ऑल्सो। तो इन पोस्टों का क्या होगा सर? ये कोर्स तो ऑटोमेटिकली डाई हो जाएगा 2 इयर्स वाला। देखिए, यदि एडमिशन नहीं तो ऑटोमेटिकली डाई होगा ही होगा। यस सर। इसमें तो कोई बात ही नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, तो बाहर की तो खैर डेटा ही है केवल, लेकिन राजस्थान में तो मेरे आंखों के सामने देखा मैंने कि यहाँ के 70% इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए। अब बंद हो गए तो उसका तो मतलब क्यों बंद हुए, वही जो आप बता रहे हैं वही कारण है। सर टीचर्स का क्या करेंगे? लड़के नहीं है तो है। सर टीचर्स एडेड पोस्ट पे उनका क्या करेंगे सर? वो कहाँ जाएंगे?
अब ये तो देखिए आजकल ओपन मार्केट है, वो जो आप सर्विस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं ना, वो जमाना नहीं रहा। वो जमाना नहीं रहा। केवल गवर्नमेंट सेक्टर में भी जबरदस्ती पकड़े हुए हैं इस बात को, वरना गवर्नमेंट सेक्टर में भी दुनिया, सारी दुनिया में ये कंसेप्ट आ गया है, जहां जो कैडर हमें अंग्रेजों ने दिया, उस अंग्रेजों ने भी ये कर दिया है कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी सर्विस सिक्योरिटी है, उनके यहाँ जरूरी नहीं है। यदि आपकी एफिशिएंसी नहीं है, यदि आप ठीक काम नहीं करते, तो वहां भी ये एक्चुअली लेबर लॉज और ये सब जो लॉज हैं वो सारे सर्विस सिक्योरिटी के लिए हैं, लेकिन धीरे धीरे सब डिले होते जा रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट का तो फिर वो एम्प्लॉय तो आपको कैसे रखा, जब लड़के नहीं है तो वो तो आपको सोचना है कि हमें क्या करना है। ये मैंने वो कहा तो ना आपको नेचुरली बार सर, बार कि हम वो अपने आप को यूनिवर्सिटी वेल्युबल बनाए कैलेंडर, रखना पड़ेगा है। यूनिवर्सिटी कैलेंडर भी यही कहता है कि जब आपका कोर्स, आप कोई भी कोर्स छोड़ते हो तो 3 महीने का है एक नोटिस। यहाँ जो पाइपलाइन में बच्चे हैं वो निकल जाएंगे तो धीरे धीरे ये कोर्स तो खत्म हो ही जाएगा सर। वो तो केवल वही नहीं, वो तो सभी मतलब गवर्नमेंट में भी यही है कि यदि आपकी कोई बंद होती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, बंद होती है वो, तो वहाँ 3 महीने का कोर्स 3 महीने नोटिस देके उनको कर दिया जाता है। नोटिस विद पेज लेकिन बोथ। गवर्नमेंट में तो क्या है कि उनका एक जगह बंद है, दूसरा है, तो कोर्ट आ जाता है बीच में कि आप यहाँ नहीं तो वहां कर लीजिए। उनके तो पास बहुत कॉलेजेस है ना, एक कॉलेज बंद होता है तो वो कहते हैं वहां ले जाइए इनको। यस तो सर, वेरी क्रिटिकल। लेकिन गवर्नमेंट में भी वो सिक्योरिटी नहीं है कि वो आपको घर बैठे सैलरी देंगे, ये नहीं है। वो भी है 3 महीने 4 महीने वॉलंटियर डिपार्टमेंट, रिटायरमेंट, कंपल्सरी रिटायरमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर। और राइट सर। कोर्ट्स का निर्णय भी देखिए समाज में जो धारणा होती है उसी के अनुरूप होता है। आजकल कोर्ट्स भी इस बारे में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती कि साहब इनको एम्प्लॉयमेंट में रखिए। यस सर। ये सब नहीं होता। अब गवर्नमेंट में भी देखिए, अब प्रजातंत्र है अपने यहाँ, इसलिए सब वोट पॉलिटिक्स के लिए होता है। लेकिन गवर्नमेंट पर भी जो भार पड़ रहा है एम्प्लॉइज का और पेंशन का, वो अपने आप में इतना भार है कि दे आर नॉट हैविंग सरप्लस फॉर देयर डेवलपमेंट। यानी आज 50% से ऊपर पैसा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की पेंशन एंड सैलरी में जाता है। तो इसलिए जो की थी पेंशन की जो स्कीम 2004 से दूसरी लागू की, तो उसका कारण यही था। तो ये तो हम सबको सोचना पड़ेगा, हमें तो हमेशा अपने आप को स्केलेबल रखना पड़ेगा। बहुत गलत शब्द यूज कर रहा हूं मैं। बिल्कुल अपने बिल्कुल आप को सही बात है, हमेशा absolutely बाजार right. के लिए तैयार रखना पड़ेगा। आप ये किसी कोर्स से उम्मीद मत करिए कि वो लड़के नहीं होंगे तो इंस्टीट्यूशन बंद करने के लिए रोक देगा या आपको सैलरी देगा 3 महीने की, 6 महीने की, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से कोई नहीं देगा। यस सर, यस सर, थैंक यू, Thank you, थैंक यू sir. सर। और हमारे पास भी कम से कम यूपी की, मुख्य रूप से यूपी की कम से कम हर मीटिंग में 10, 20, 30 एप्लीकेशन बंद करने की आ जाती है। एंड रीजन इज ओनली दिस कि साहब बच्चे नहीं है हमारे पास। So we have next question from Dr. Anita Arora. Dr. Anita Arora, please ask your question. Good afternoon, everybody. Am I सुनाई दे You are रहा है? audible, ma'am. You are audible. Good afternoon, sir. सर का सेशन बहुत अच्छा रहा। बहुत प्रैक्टिकल बात कही उन्होंने। एक क्वेश्चन था मेरा ये कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मल्टी डिसिप्लिनरी होने के लिए बीएड कॉलेजेस को के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता। हमारे कॉलेज ने 2-3 साल पहले भी अप्लाई किया था कि हमें बीए दे दी जाए, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है, कुछ हमारी मैनेजमेंट रेडी थी बनाने के लिए। हमने प्रोसेस भी चलाया, बट उसका कोई हमें कोई खास उसका हमें बेनिफिट नहीं मिला। बेनिफिट छोड़ के हम ये कहेंगे कि हमें लगभग इग्नोर ही किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या एनईपी, यूजीसी या एनसीटी के पास कहीं कोई लेटर या कोई इस तरह का नोटिफिकेशन है कि बीएड कॉलेज अगर वो चाहते हैं तो यूनिवर्सिटीज उनको अलाउ करें? नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है मैडम। वो तो अब आजकल तो एकदम ओपन पॉलिसी है। जो भी इंस्टीट्यूशन आप खोलना चाहते हैं
वो खोल सकते हैं, कहीं कोई प्रतिबंध ही नहीं है। सर पंजाब तो यूनिवर्सिटी हमारा B.Ed कॉलेज है, पंजाब यूनिवर्सिटी 2 ईयर हम B.Ed चलाते हैं, पंजाब ये यूनिवर्सिटी हमें BA या B.Com देने को तैयार नहीं है हमारे क्यों पास। क्यों नहीं है तैयार, क्यों नहीं है तैयार? सर वो उनकी अपनी पता नहीं कौन सी उसमें वो जी वो रहे हैं कि आपका मैनेजमेंट अच्छी तरह जानता है किस तरह से लिया जाता है, आपका मैनेजमेंट अच्छी तरह जानता है कि किस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी उनको देगी। सर हमने प्रोसेस किया था सारा, लेकिन वो कुछ ना कुछ इस तरह से कह रहे हैं कि B.Ed कॉलेजेस जो है आप B.Ed कॉलेज के साथ में नहीं चला सकते, आप अलग से नहीं, कॉलेज वो खोलिए। तो अब नहीं कहेंगे। देखो वो तो रिटर्न में कहीं नहीं कहीं जाएगा, नहीं मौखिक आ जाएगा, वो बात तो खत्म हो गई कि B.Ed कॉलेज साथ आप नहीं चला सकते, दैट विल नॉट बी देयर। अब लेकिन हर यूनिवर्सिटी जैसे हरियाणा में 1 करोड़ की वो मांगते हैं FD, हाँ अब जी, वो आपको यूनिवर्सिटी 1 करोड़ की FD मांगती है आपके लिए, तो वो तो देना पड़ेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर मांगते हैं, बिल्डिंग मांगते हैं, वो देनी पड़ेंगी। वो सर हम सब रेडी हैं करने के लिए, तो बट वो रेडी है तो यूनिवर्सिटी फिर रेडी नहीं है। क्यों, कारण क्या बताइए ना, वो सर वो कारण क्या है? कारण यही बताते हैं कि उनके पास हमारा जो कैलेंडर है पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसमें इस तरह की कोई प्रोविजन नहीं है। सो आई थिंक कि अगर क्या नहीं इस तरह प्रोविजन से क्या, नहीं प्राइवेट कॉलेज खोलने का प्रोविजन ही नहीं है। नहीं, प्राइवेट से हमारा प्राइवेट कॉलेज ही है, अभी नहीं नहीं पिछले उसका 17 ईयर से चल रहा है। हम चाहते थे आप कि हमारे साथ इसी B.Ed कॉलेज के अंदर ही हम BA ले लें, वो आप कहते ऐसा हैं करिए। अलग से खोलो। नहीं 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 नहीं, अलग से खुलेगा तो B.Ed कॉलेज में क्या मतलब, वो तो उसी कॉलेज में अलग से खुलेगा, वो क्लासेस तो अलग ही होंगी ना उसकी। नहीं नहीं सर, क्लासेस अलग होनी है, अलग से इन द सेंस की कॉलेज ही अलग हो, उसका प्रिंसिपल भी अलग हो, B.Ed कॉलेज का प्रिंसिपल भी अलग हो, वो इस तरह पुराने से। थीम, अब आप उनसे कॉन्टेक्ट करिए, वो हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ वो हो थैंक यू जाएगा, सर। कोई दिक्कत नहीं, आपको थैंक दिक्कत Thank you, नहीं यू। है। sir. Thank you. Any other question? सर मेरा पर्सनल एक क्वेश्चन है आपसे कि हम आईटेप को लेके बहुत एम्बिशियस हैं, और आईटेप कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़े सालों से चल रहा था इंडिया में, और साइंस और कॉमर्स जो था उस फील्ड में इट वाज अ टोटल फेलियर। जितना मैं जानती हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर देयर वाज नो एडमिशन इन BSc B.Ed. We are having some colleges in the with the affiliation of Punjab University, they didn't had any kind of admission in BSc B.Ed. Rather, they had full admission in BA B.Ed only. So why we are so ambitious to change the education colleges into multidisciplinary? Is it a guarantee of success for future? नहीं नहीं, मल्टी डिसिप्लिनरी कंसेप्ट और 4 ईयर के कंसेप्ट में कोई आप अलग अलग सोचिए इसके बारे में। मल्टी डिसिप्लिनरी ये कि एजुकेशन के साथ दूसरे कोर्स होने चाहिए, इंजीनियरिंग के साथ दूसरे कोर्स होने चाहिए, मेडिकल के साथ दूसरे कोर्स होने चाहिए, संस्कृत के साथ दूसरे कोर्स होने चाहिए, ये है कंसेप्ट। यानी सर क्यों होने चाहिए? That is my question. वही तो आप एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी नहीं ना आपने, दिक्कत ये है। आप जरा पढ़िए जाके, आज जरूर पढ़िएगा, फिर कल मेरे से बात कीजिएगा क्यों होने चाहिए। कारण ये है कि आप वन साइड डेवलपमेंट नहीं कर सकते किसी का, यानी आप मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब हर सब्जेक्ट का पढ़ने वाला पढ़ाने वाला वहां होगा तो बच्चे का विकास ज्यादा होगा, टीचर का खुद का विकास ज्यादा होगा। आप सुबह से शाम तक केवल टीचर एजुकेशन वाले लड़कों से व टीचर एजुकेशन वाले अध्यापकों से बात करते हैं तो बाकी फिर तो पूरा छूट जाता है ना, ये इसमें समझिए। हायरार्की सर, इसमें हायरार्की जो है वो बेसमेंट से टॉप फ्लोर की तरफ जाएगी, टॉप फ्लोर से बेसमेंट की तरफ नहीं आनी चाहिए। ये जो हायर एजुकेशन को हम पहले कन्वर्ट करना चाहते हैं और बेस को हम लोग जो स्कूल एजुकेशन से स्टार्ट होना चाहिए, वी नहीं आर स्कूल नॉट एजुकेशन तो पहले प्रोवाइडिंग से द बेसिक मल्टी डिसिप्लिनरी इंफ्रास्ट्रक्चर। मैडम, स्कूल एजुकेशन तो ऑलरेडी मल्टी डिसिप्लिनरी है, वो कहाँ है अलग से, वो तो है ही मल्टी डिसिप्लिनरी। उसमें से ग्रेजुएट होने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद ही स्टूडेंट जो है दे टेक एडमिशन इन B.Ed, देन हाँ तो ले हाउ इट सकते कुड हैं। बी डिफरेंट? अरे वो तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो मैंने पहले ही कहा ये बात कि भाई पोस्ट ग्रेजुएट के बाद 1 साल में कर लेगा, ग्रेजुएट के बाद 2 साल में कर लेगा, उसमें ठीक है चेंज ना। क्या आ जाएगा सर? इट वुड बी ऑन द सेम लाइंस, जस्ट nomenclature would change. Education colleges will be नॉमिनल named बाबा as एक multidisciplinary. साल भी बचता है, 1 साल भी बचता है उसमें, ये सब में है। जैसे लॉ में भी इंटीग्रेटेड कोर्स,
MBA में भी है, इंजीनियरिंग के साथ MBA कराते हैं, 4 साल का MBA। They have independent universities. Why don't we have our own independent universities of teacher education, like in Tamil Nadu and Delhi University, नहीं, लेकिन UT? उनको मल्टी डिसिप्लिनरी होना पड़ेगा मैडम, उनको भी मल्टी डिसिप्लिनरी होना पड़ेगा, वो केवल टीचर यूनिवर्सिटी नहीं रहेंगी। नहीं सर, आप उनको मल्टी डिसिप्लिन में एक डिपार्टमेंट बना करके, आई डोंट थिंक कि जितना रिगरस ट्रेनिंग एट प्रेजेंट अच्छे कॉलेजेस में चल रहा है, दैट वुड बी प्रोवाइडेड इन फ्यूचर। वो केवल आपके सोचने से नहीं होता ना भाई, वो तो देश Sir, के you are हित में, also, sir, एजुकेशन के you हित are में क्या also होगा। product of that system which आप was running पहले from our freedom. अभी देखो, सेनापति जी ने भी कहा था कि मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों होना चाहिए, आपने उनका भी सुना होगा पूरा, कि व्हाई इट शुड बी मल्टी डिसिप्लिनरी। आप NEP पढ़ेंगे तो उनके प्रीफेस में पता लग जाएगा आपको मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों होना चाहिए। नॉलेज जो है वो वन साइड नॉलेज लड़के को डेवलप नहीं करेगा, उसको चारों ओर से उसको मिलना चाहिए। केवल हार्ट के लिए आप कोई हॉस्पिटल खोलें, केवल हार्ट, तो केवल हार्ट का ही मरीज रहेगा ना वहां, तो केवल हार्ट के ही पेशेंट आएंगे। उस पेशेंट को मान लो कहीं दूसरी बात की प्रॉब्लम हो गई, यूरिन की प्रॉब्लम हो गई, तो फिर क्या होगा, दूसरी कॉलेज में जाओगे या दूसरे Sir, but अस्पताल में जाएगा। वो इसलिए ऐसा होगा कि लेकिन ये जैक ऑफ ऑल तर्क, मास्टर अरे ऑफ ये नन। तर्क कुतर्क का विषय नहीं है, ये कुतर्क का विषय पढ़ रहे हैं आप। नहीं, मल्टी लेकिन डिसिप्लिनरी सर तो मैं, होना ही चाहिए। ऐसा करिए आप मुझे कि मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों नहीं होना चाहिए, इस पर एक लेख लिख के मेरे को भेजिए आप। right, definitely sir, हाँ, definitely बस we have so many फिर बात logics, करेंगे। क्योंकि जैक लेकिन ऑफ ऑल मास्टर पहले ऑफ नन मल्टी doesn't डिसिप्लिनरी work. क्यों, पहले मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों होना चाहिए, इसको जरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। हो सकता है Right आपकी sir, बातों के जवाब उसमें मिल जाए, आप जो कह रही right हैं ना, sir, right उन सब sir, का जवाब मिल जाएगा उसमें। यदि नहीं मिले तो मुझे बताइएगा। right sir, right, definitely sir. सर Any मैं other question? Sure. सर एक तरफ से हम ये कह रहे हैं कि कॉलेजेस आर सेलिंग डिग्रीज जब से मशरूमी हुई है, लेकिन जो मुझे थोड़ा बहुत समझ आया NEP के ड्राफ्ट को पढ़ के, आई थिंक इट NEP itself is increasing privatization of Indian higher education. Is it so? So I think which is dangerous and will make higher education lose its quality of equitable growth. But what I understood from the draft, and when affiliated colleges are asked to be autonomous, the question of funding must be addressed over there, which is very important point, जो कहीं भी address नहीं हुआ है. So how is it envisaged? Can there be a philanthropy without concern about the commodition of education? मतलब कैसे होगा ये सब? एक तरफ से तो हम कह रहे हैं कि privatization, मतलब they are selling the degrees. एक तरफ से भी NEP खुद ही उसको encourage कर रही है कि ऑटोमेटिकली है, जब 2030 तक हम ये कह रहे हैं कि हर एक इंस्टीट्यूशन जो मल्टी डिसिप्लिनरी के लिए अप्लाई करेगा, उनकी जो 3000 मोर देन 3000 स्ट्रेंथ होनी चाहिए या कुछ यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होंगे, तो इस फ्लॉ को हम कैसे ओमिट करेंगे? कैन यू गाइड अस? ये बाजार के सिस्टम से ही होगा, किसी रेगुलेटरी सिस्टम से नहीं हो पाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों बंद हो गए जो खराब थे, वो B.Ed कॉलेज क्यों लड़के नहीं मिल रहे, क्यों खराब थे, वो बंद हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये तो बाजार का ऑटोमेटिक प्रोसेस है। बाकी प्राइवेटाइजेशन को आप रोक नहीं सकते, सरकार के बस की बात नहीं है कि इतने लोगों को, इतनी बड़ी जनसंख्या को स्कूल और कॉलेज और सब कुछ दे दे। ये सरकार के कंट्रोल में नहीं है, बस की बात भी नहीं है, कर भी नहीं सकती कोई सरकार ये। इसलिए प्राइवेटाइजेशन तो जरूरी है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि दे आर ऑल आर इस तरह के हैं जो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते, जो पढ़ाते नहीं है। IIT इज आल्सो प्राइवेट, IIMs आर आल्सो प्राइवेट। तो फिर ये क्यों है? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कुछ की गुडविल नहीं है क्या? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इज आल्सो प्राइवेट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज आल्सो प्राइवेट। तो ये नहीं है कि प्राइवेट का मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट का मतलब वो खराब माल देगा, ये नहीं है। मुख्य बात यह है कि जो बाजार में अन्य प्रोडक्ट हैं वैसा ही एजुकेशन प्रोडक्ट बन गया है एक। अच्छी कार आप लाओगे तो बिकेगी, नई कार अच्छी होगी तो नहीं बिकेगी, फेल हो जाएगी। सर तो एजुकेशन भी ऐसा ही हो गया कि यदि आप उसको ढंग से तैयार करके बच्चे को एम्प्लॉयमेंट दिला सकते हैं तो चलेगा आपका, नहीं दिला सकते तो नहीं चलेगा। सीधी बात ये। ठीक है सर, इसको आप इमोशनल बेस्ड मत सोचिए, आप बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचिए।
हाँ जी सर, प्रैक्टिकल थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर, सॉरी टू इंटरवीन। जैसे हम जितने भी एक्सपर्ट है सभी बात करते हैं तक्षशिला की, नालंदा की, हमने आर्यभट्ट दिए, चाणक्य दिए, है ना सर। तो मुझे लगता है जब जब पूरे भारत को एक विश्व गुरु की तरह माना जा रहा है, तो आज क्यों जरूरत पड़ी एनडीपी 2020 की? किस लिए जरूरत पड़ी? जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बात पड़ी है, या किस लिए? जब हम आर्यभट्ट को भी मानते हैं, चाणक्य को भी मानते हैं, बड़े बड़े मैथमेटिशियन यहाँ से हुए हैं, हमारे चंद्रयान में कहाँ कहाँ पहुंचे हैं, तो एनडीपी 20 की क्यों जरूरत पड़ी हमें? आपने एजुकेशन सिस्टम को पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब। नहीं सर, पढ़ के बोल रही हूँ, सुन के बोल बिल्कुल रही हूँ, नहीं पढ़ा। क्यों जरूरत पड़ी हमें? जब आजादी मिली उसके बाद एजुकेशन में चेंज हुआ कुछ? नोट वही कह रही हूँ सर, 34 साल के अरे बाद मैं एनडीपी कह रहा हूँ, कुछ 2020 चेंज, की जरूरत पड़ी। मेरे Excuse क्वेश्चन me, का सीधा सीधा 34 जवाब साल दीजिए। बहुत होते हैं सर। कुछ चेंज हुआ? 34 आपने me? चौथा रिकमेंडेशन पढ़ा था हाँ जी सर। तो कोटा बनवारी लाल रिकमेंडेशन जी, की बात लागू हुई। हाँ जी सर। तो ये सब मतलब इन सबको जरा इसलिए लागू ये सब करना पड़ा। आप भारत में शिक्षा का तो प्रसार हुआ, लेकिन शिक्षा में भारत नहीं आया। हम भारत सेंट्रिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं बस, एजुकेशन को। हाँ ये ये बात है है। जी इसमें मुझे एक बात बताना चाहता हूँ कि जी सर। सुशीला नारंग मैडम जी ने इस बात पर प्रस्ताव किया है कि हमारी भारत देश में चाणक्य था और आर्यभट्ट था, सभी लोग थे। हाँ जी। और हमारी शिक्षा पुरानी देश में, पुरानी शिक्षा में वो तो मल्टी डिसिप्लिनरी था। हाँ जो हाँ जी। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथोडोलॉजी के बारे में, पेडागोजी के बारे में आप बता रहा हैं, वो यस सभी कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथोडोलॉजी वहां थे। और हाँ जब जी नालंदा में या और हमारी गुरुकुल शिक्षा में, या जो शिक्षा पुरानी भारत में स्थित थे, इसमें पूरा हमारी ये अब बताने वाली नई शिक्षा नीति में जो बताया है, वो तो आप लोग मानता है कि वो वैदेशिक सिद्धांतों के आधार पर बनाया है। लेकिन एक बात आप मानिए कि जो सिद्धांत वो नेचुरलिज्म या रियलिज्म या आइडियलिज्म या प्रोग्रेसिविज्म या कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म जो भी है, वो तत्वशास्त्र, तत्व चिंता है, दर्शन शास्त्र है, वो पूरी दर्शन शास्त्र हमारी देश से ही लेकर बनाया है। ये हाँ सच जी हाँ जी, बात है, क्योंकि ये फैक्ट है। हाँ जी या इन see at the end of the Vedic thought in India, that is called Upanishad, Vedanta. It is the end of the Vedic thought in India. After that only the philosophies were started to develop in the West. You just imagine, Okay, sorry for interruption. You are Sorry. right, sir. You are right. Thank you so much sir, it's a nice answer. Thank you, so much. sir. We have last question from Dr. Gurvinder Kaur. Dr. Gurvinder, you may ask your question. Please be brief. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Good afternoon, sir. My question is that I am totally agree with the Sarvjit ma'am कि मल्टी डिसिप्लिनरी से ही सर हम लोग आ रहे हैं। स्कूल में भी आपने जैसे कहा मल्टी डिसिप्लिनरी चल रहा है, हम उसके बाद ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो हम उस एनवायरनमेंट से होकर ही तो आ रहे हैं सर मल्टी डिसिप्लिनरी में से। ये तो एक टेक्निकल 2 साल की या 1 साल की डिग्री है, तो इसमें हमें क्या मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी ऐड करना है? हमारी सारी एजुकेशन हम शुरू से ही तो मल्टी डिसिप्लिनरी में से आ रहे हैं, तो उसमें 1 या 2 साल में हमारा क्या मतलब नहीं, 1 या 2 साल में सारे डिपार्टमेंट साथ चलने चाहिए सर। वो तो साथ रही है, तो एक टेक्निकल डिग्री होगी कि हाउ टू टीच, है ना सर। उसमें सारे सब्जेक्ट, सारे मैथ है, साइंस है, कॉमर्स है, वो सब सब्जेक्ट टीचर हैं हमारे पास पेडागोजी के, तो वो अलग अलग बता रहे हैं हाउ टू टीच। तो उसमें सर अपने आप में B.Ed सर मल्टी डिसिप्लिनरी है एक तरह से देखा जाए तो। देखिए, आपके सारे क्वेश्चन जो है ना, वो इसलिए हैं कि आपकी संस्था महसूस करती है कि मल्टी डिसिप्लिनरी जल्दी नहीं हो सकती। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इसको पढ़िए पूरा, इसकी एक एक लाइन पढ़िए। एक्चुअली NEP जो है वो
ड्राफ्ट नहीं है, इसका एक एक लाइन जो है ना वो अपने आप में ये समझिए मंत्र के रूप में है। जैसे मंत्र का बहुत बड़ा अर्थ होता है ना, आप स्वयं भी सोचिए। मल्टी अभी इन्होंने सर ने एक्सप्लेन किया, कितना बढ़िया तरीके से किया मल्टीडिसिप्लिनरी एक्सप्लेन। क्या गुरुकुल में केवल वशिष्ठ जी केवल शस्त्र की शिक्षा देते थे क्या, या केवल शास्त्र ही पढ़ाते थे, या कभी और कुछ पढ़ाते थे? तो मल्टी भाई लड़के को तो सारी चीजें बतानी पड़ेगी ना, डेवलपमेंट तो सारा करना सर पड़ेगा ना। हमारे पास जैसे बीएड में अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं, सबका टीचर होता है ना सर। कॉमर्स का भी माहौल है, इकोनॉमिक्स का भी है, साइंस भी है, मैथ भी है, हिंदी भी है, लैंग्वेजेस मतलब सारी हैं। तो आपके पास केवल टीचर एजुकेशन का लेक्चरर है, वो टीचर एजुकेशन के ही लड़के हैं जी। तो केवल सर उसमें पेडागोगी सारे टीचर है। सब्जेक्ट तो है ना सर, सब्जेक्ट तो सारे ही हो रहे हैं ना कवर अप। और हम बीए भी तो मल्टीडिसिप्लिनरी में से करके आए हैं सर। चलो अगर आप हम एक पोस्ट कस्तूरी पीजी है रंगन जी वो को भी मल्टीडिसिप्लिनरी में से आप करके आए हैं कस्तूरी सर। रंगन जी को लिखिए, ये सब बातें कस्तूरी रंगन जी लिखिए, उन्होंने थैंक सजेस्ट यू, किया है। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर गोविंदा मैम जी। मैम सर प्लीज, मेरा आप बहुत छोटा सा क्वेश्चन है मैम, मेरा बहुत छोटा सा क्वेश्चन और सारी बाकी इन जवाब दे सब सकते हैं तर्क वितर्क उसका। से कोई फायदा नहीं। सर सिर्फ आप नहीं यदि सर, डिस्कशन करिए। मल्टीडिसिप्लिनरी में नहीं काम कर रही हैं तो आप अपने आप को मल्टीडिसिप्लिनरी तक ले जाने का प्रयास कीजिए, या बिल्कुल आप बिल्कुल सर। इंस्टीट्यूशन को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाने का प्रयास कीजिए। सर प्रैक्टिकल उसके बात लिए ये है, बिल्कुल बाकी बिल्कुल तर्क सर, वितर्क उसके से लिए कोई हमें फायदा नहीं है। सर उसके लिए हमें एनसीटी को अप्लाई करना पड़ेगा। एनसीटी का पोर्टल खुलेगा जुलाई 23 में जाके, अब वो तो तो ये खुले तब पोर्टल कर पहले देना भाई। खुलवाना चाहिए सर। नहीं नहीं, उसकी तो वो मेरे बात बस की बात नहीं है। वो तो जो तय होता है वो होता है, वो इस साल नहीं खुलेगा, बस अगले साल खुलेगा। फिर 23-24 तो जीरो एडमिशन चला जाएगा फिर। अब किस लिए? आप जो चला रही हो चलाइए ना आराम से, कौन मना कर नहीं रहा है सर, हम आपको? आईटीपी के लिए अप्लाई करेंगे ना, हम तो मर्जर में जाएंगे। हाँ तो फिर जब खुले तभी अप्लाई करोगे ना। वो जुलाई में 23 में खुलेगा। हाँ 23 में क्या, हाँ जुलाई में खुलेगा, 24 से आप कर सकेंगे, ये ऐसा लगता है। यस सर, 23-24 जीरो ईयर जाएगा फिर। चलो ठीक है सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग एंड इट वाज वेरी नाइस डिस्कशन। आपने बहुत पेशेंस से हम सबके बड़े सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। आप हमें थैंक यू इतने सर। अपने लगते हैं, थैंक यू इसलिए सर। हम आपसे लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं और नहीं नहीं नहीं, आपसे कोई बात आपसे नहीं। पूछ भी लेते नहीं, हैं। लड़ना झगड़ना कहीं हुआ ही नहीं अपना भाई। कभी भी इतनी हॉट टीचर तो, डिबेट होती है ना सर यदि कई मेरी बार। जगह कोई एडमिनिस्ट्रेटर होता तब तो वो तो सोचता है भाई लड़ना झगड़ना हो रहा है, मेरी बात मान हम नहीं रहे, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। आपने बाकी सर अपन तो शुरू सब से ही टीचर हैं, हमारा अपना काम ये है कि जो भी क्वारी हो अपनी वो हमें रखनी चाहिए, पूछनी चाहिए, बतानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली एक सर सभी रिक्वेस्ट, बड़े रिक्वेस्ट और परेशान हैं, इतनी सी है। सारे डायलेमा में है, किसी को पता नहीं लग रहा कि एक्चुअल प्रॉपर चैनल है क्या, कि कहाँ नहीं, से आप शुरू बहुत चीजें करना है। क्लियर होगी सुशीला मैडम, बहुत हाँ सारी चीजें क्लियर है हाँ अब। जी हाँ सर जी हम हाँ तो जी। आपके लेक्चर की वेट कर रहे थे, बिकॉज यू आर पितामह इन दिस फील्ड। Thank you so much, sir. ठीक Your है। experience in our field has been invaluable, and your guidance and leadership will be instrumental in our success. Thank you for sharing your wealth of knowledge with all of us and for always being willing to lend a helping hand to us. And your expertise is greatly appreciated, sir. And I would like to say that we are lucky and we are grateful for having the opportunity to hear Professor HRUSHIKESH Senapati ji also. His session was also a valuable learning experience for all of us. And I'm grateful for the time and effort that Professor HRUSHIKESH Senapati ji put into it. And now for facilitation, I would like to call upon Dr. Shipal Singh ji, President of PACE, for facilitation. Over to you, Dr. Shipal Singh ji. Thank you, ma'am. Am I audible? Yes, sir, you are clearly audible. Okay. Very good afternoon, one and all present here. I extend my warm thanks to our today's great speaker, Professor HRUSHIKESH Senapati sir, former director NCERT, and Professor Dr. BANWARI NATIA, Chairperson, NRC NCTE. First of all, I would like to say something about the presidential speaker, Professor HRUSHIKESH Senapati sir, former director NCERT. He has discussed about a thrust area of transformation of teacher education institutions. He has told us the academic transformation according to NEP 2020. Children should be connected
to our roots by integrating culture in the curriculum. Also, school curriculum should be based on a skill for the holistic development and to encourage formal vocational education ratio in our country. So according to NEP 2020, that part should be in our teacher education program. People teacher should be a part of our global education to improve children's skill. People teachers should be skilled in various areas of life. He has also discussed the curriculum pedagogy and assessment. NEP 2020 recommended that pedagogical process should be to help students to be a good citizen, not for a just covering syllabus. Children should be able to learn by the experience. So teacher education programs should be like this, that pupil teachers can be fully ready to use ICT tools in teaching learning process. Also should be aware of physical and mental health. Assessment of children in holistic way should be reflected in teacher education program. Performance of the children should be based on overall personality. He has also shared in ITEP, when students join teacher education program after 12, will be able to prepare academic part as well as gain long internship experience. So the next thematical session, Dr. BANWARI NATIA, Chairperson NRC, NCTE, sir, has discussed about a critical evaluation of the implementation of guidelines in teacher education institutions. He has discussed the whole education age and institutional phase in present recommendations of NEP 2020. It reflects that the most institutions are selling degree. So NEP recommended that that type of the 75% of institutions should be shut down, or they should follow NCTE norms. Only 784 institutions have 4 years programs. Almost 250 colleges are multidisciplinary. Rest institutions, approx 18,000, need to be updated as per NEP 2020. So the problem is that how these institutions will be converted in multidisciplinary institutions. To convert multidisciplinary institutions, more infrastructure is needed, like land and building. He has also emphasized that we are still, NEP 2020 has 3 types of the teacher education courses. They are 4 years, 2 years, and 1 year. Pedagogy is needed in higher education also. So IIT and NIT also applied for the ITEP courses. Hence, for teacher educators, it will be a problem to survive in future scenario. They have to become multidisciplinary for new types of the institutions. Employment sectors should be uplifted so that the educators can increase their value. We all need to do effort to improve the situations of the teacher education. Thank you very much, sir, for a great information. I extend a warm gratitude to our PACE members. And last but not least, I extend a heartfelt gratitude to all the participants of this 5 years workshop. Most of them are the participants of the colleges of education, along with the teacher educators who have joined us from all across India. So once again, I thank you very much. And we are so glad to have joined us for this 5 years national webinar. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you for your kind words, sir. Now, I would like to invite Dr. Mahanta Gowda, member of PACE Karnataka chapter, for facilitation. Over to Dr. Mahanta Gowda. On behalf of Mahanta Gowda, sir, I am reading his felicitation note. Respected Professor HRUSHIKESH Senapathy, former director, NCERT, who is chairing this meeting, Professor Dr. Devanandan, National General Secretary, PACE,
who has welcomed us to the meeting, Professor Raghavendra P. Tiwari, Vice Chancellor, Central University of Punjab, Professor S.K. Kar, former Vice Chancellor, CCS University, Meerut, and Mahatma Technical University, Professor Dr. N. Panjanadam, former Vice Chancellor, Chennai, Professor B.D. Kumbar, Vice Chancellor, Devangara University, Karnataka, Professor Dhananjay Joshi, Vice Chancellor, Delhi Teachers University, Professor Pradeep Kumar Mishra, Director, CPRHE, NEPA, Dr. Banwari Natia, Chairperson, NRC, NCTE, who wonderfully handled thematic session, Dr. Shivpal Singh, President of PACE, Dr. Megha Gulwani Vishram, Vice President PACE, Dr. Gangadhar KS, Joint Secretary PACE, Dr. Desharath Singh Chauhan, Treasurer PACE, Dr. Venkatesha K, Dean of Education, Devangara University, Dr. Sarogi Swami, Executive Member PACE, Dr. Sharab Kaur, Executive Member PACE, Dr. Tripta Parmar, Member PACE, Dr. Sushila Narang, Member PACE, Dr. Benny Jacob, KPPM College of Education, and all other dignitaries present here today. Good afternoon, one and all. It is my privilege to be here in this webinar to felicitate all participants on behalf of Principals Association of College of Education. In this Zoom gathering, we have been discussing about the systematic ways of transformation regarding higher education institution and standalone B.Ed colleges into multidisciplinary institution. I am proud that the initiation of PACE and this webinar are gonna be a breakthrough for all successive quality improvement programs that will happen in the future educational scenario. In this moment, I am wishing all the educational stakeholders who have been gathered here my heartfelt congratulations. Thank you. Thank you so much, ma'am, for presenting facilitation on behalf of Dr. Mahanta Gauraji. Now it's time to propose vote of thanks. And I would like to call upon Dr. Venkatesha K from Devangara University, Karnataka, to please propose vote of thanks. Thank you, madam. Audible, madam? Yes, sir, you are. Good afternoon to all. It's my immense pleasure to render vote of thanks to all eminent personalities in this occasion. First of all, Professor HRUSHIKESH Senapathy, former Director, NCERT. Sir, you have gave wonderful and informative information to the all these platform personalities. On behalf of KPPM College, and Davangere University, I wholeheartedly thank you, sir. Thank you, sir. HRUSHIKESH, sir. Second one, the Prof. BANWARI NATIA, sir, former Chairperson, NCERT, NRC. Sir, you gave that actually yours is the official information for us. Actually, that you were all thinking NCT means it is something different. It is some way it is different. So anyhow, you gave such a wonderful information about multidisciplinary. Sir, even our PACE chairman also, General Secretary also told that in that Gurukula system, multidisciplinary setup was there in pragmatism, realism. That's also already we have that also, sir. That has changed to that multidisciplinary programs. So really, it is wonderful information, sir. So you are patiently answered to all our all the audience of this platform. Really, it is wonderful session, sir. Our Banwari Lal sir also gave to answer all questions. A really wonderful experience of that, sir. Really, that way of our PACE and KPPM College and Davangere University, all behalf of all our participants, really I'm wonderfully thankful, sir. Then again that our chairperson of the Banwari sir also, he gave very good information of the PACE. Shivpal Singh sir, really from last 4 days, he is leave all his personal works also. He is the commitment to the this platform. I think I get information from all over India, sir.
Really, it is the wonderful platform. Really, that 4 days nearly into 4-5 means 2 means nearly top 10 personalities like teacher educations. We have this platform. They're all giving such a wonderful information. Actually, this is the revamp of that teacher education in the after long time. Actually, that NCT came up of even a 2-year B.Ed program, 1-year B.Ed program. Now it is 4-year B.Ed program along with the multidisciplinary. It is really wonderful the movement in this occasion. That really I congratulate. I thankful to our organizing committee chairperson, president of PACE also. Then our general secretary Devanandan sir. He motivate all to participate in this occasion, and really I personally on behalf of PACE and KPM College and Down University, I heartfully that thankful to you, sir, Devanandan sir, and all participants. Really, sir, every day I am also here. Nearly 100 and plus, nearly first day 200, 180, 170, 150 also there, sir. Whenever started the program, from starting to till end, near 150 participants are there. This is enough for us, sir. You give that right information, right time, and right personalities. Like I thought that like that, really that this information it is go to all over India. That all our Senapathy BANWARI really help us for that regarding our teacher education in the context of NEP. So, sir, that especially in our Karnataka, we already implemented that NEP program in Karnataka state also, sir. Our university also, we are implemented the NEP program. Already 1 year gone. That the 2 semesters NEP program it is completed. Even now also all our college principals, our students, including myself, we are having so many doubts, so many clarifications. So we need to ask that all personalities. So every day I used to get 4 to 5 calls for regarding NEP implementation and multidisciplinary program. Really, that I attended nearly 100 this type of webinar and online offline program also. But even now, it is very difficult to understanding for this situation. Rishikesh sir, you are all elderly people are there. You take care of the these teacher education programs, sir, because yesterday that teacher education, our the Tamil Nadu teacher education former vice chancellor gave such a wonderful information, sir. These are all our in this platform. We have 10 personalities like you, sir. You 10 people take care of us, and we are bounded to respect, sir. This is the responsibility of you people. I personally requesting you to take care of teacher education, take care of teacher education, because you are all telling teacher education is the backbone of education. You are all telling in the all that speech and the classroom, but nobody has take care of this, sir. Actually, there, sir, 1 year, 2 year program, that new things what it is coming. This is the your response. I am really eagerly waiting for your all your suggestions in future, now and future also. I request you, sir. We are also planning to this at least monthly or 2 months once this type of webinar, sir. Because once we set up will start, it is established, then no problem. That starting problem was there. Please help us, sir. Really, this is the wonderful sessions. That really is the first of all that face. That they are the facing the more problems, sir. Especially that my friends I will discuss with that face means PSA means they are facing facing the problems. That's why they are all collected this type of the programs, sir. Really, all 150 personalities who are there in this platform, I really bounded my wholeheartedly thanks to you all. You carry this message. You carry this what they are all experts there tell us. This you carry to your teachers, your students, your parents, your management. Especially management is the biggest task, sir. All principals, the principal role is very biggest task. One side is student, one side is the colleagues, another side is parents, another side is management, another side is higher authority. Really, this is the very big problem for the principals. In even that also, these people like Devanandan sir, Sarbas Kaur madam,
and all Shishpal Singh sir, they're all involving this activity, sir. Really, my behalf, all personalities, all 150 participants, really first I congratulate them. I wholeheartedly thankful to them also, sir. Anyhow, this that Rishikesh, please help us for this draft. It has gone to the concerned authority, MHRD, Department of Education, Government of India. So yesterday I got that all merged with the Higher Education Council. That is also possible there. Anyhow, that our teacher education means it is separately wing will be there, sir. For that, you people are help us. I personally, on behalf of Davangere University, I congratulate you, sir. I once again, I heartfully thankful to all. For I conclude my vote of thanks, sir. Thank you, one and all. Thank you. Thanks, sir. Thank you so much, Dr. Venkatesha KG, for your wise words. I think you appreciated all. Thank you so much. Sir, we conclude each day by playing national anthem. So now I request Dr. Devanandan KVG to play the national anthem and request all to stand up on their seats for national anthem.